Assalamualaikum everyone. I'm Arij Tahir, currently in my third year of mass communication, and today I'll be talking to you about NET business. जब मैंने खुद अप्लाई किया था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये कितने सवाल आएंगे, कितनी चीज़ें करनी है, किधर से तैयारी करनी है, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे टेस्ट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो अगर आपको पता हो तो आपका जो सारा प्रोसेस है वो बहुत आसान हो सकता है. सो टुडे आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट इट इन स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये आता है कि NET बिजनेस अप्लाइज फॉर 2 schools, NAST Business School NBS and School of Social Sciences and Humanities S3H. NBS में we have BBA, ACF and also BS for Tourism and Hospitality Management. And then in S3H we have Mass Communication, Psychology, Public Administration, Economics and Law. Law के लिए you need a prerequisite from HSC, but उसके अलावा you can apply for any of these. ये जो टेस्ट होता है NET साल में 4 दफ़ा होता है. ठीक है. उसकी डेट्स आप लोग इनकी वेबसाइट से कंफर्म कर सकते हैं. वो जो NET 4 है इट्स इन लाइक April to June होता है टाइम एंड मूव्स फॉरवर्ड विद दैट. उसके बाद जुलाई के बाद देयर इज नो मोर NETs. हमारा जो टेस्ट होता है दैट इज़ इन कोयटा, कराची एंड इस्लामाबाद. जो कोयटा एंड कराची का टेस्ट होता है दैट इज़ पेपर बेस्ड. ठीक है. एंड जो इस्लामाबाद का टेस्ट है दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड. Computer based is what I personally appeared for, and it was actually not as daunting as people made it out to be. It was pretty easy, pretty facilitating, and we'll get to that later. सबसे पहले हमारे पास आते हैं कि हमारे पास सवाल कितने हैं. That is 200 questions, and we have 3 hours for it. ठीक है. हमारा जो क्राइटेरिया मैनेज किया जाता है, NET accounts for 75% of the merit. Then हमारे पास 15% आता है A levels या /FSC का, and then the last 10% for O levels or metric. So you need to focus a lot on this test. जब बाकी टेस्ट से हम कंपेयर करें तो it is relatively easier because once you've prepared for it, you know what's going to be there. ठीक है. Another good thing, there is no negative marking. As I said before, there's 200 questions, and in 200 questions हमारे पास 3 sections हैं. सबसे पहले हमारे पास मैथ्स है, फिर हमारे पास है इंग्लिश एंड देन हमारे पास है इंटेलिजेंस. 80 क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, 80 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के एंड 40 क्वेश्चंस हैं इंटेलिजेंस के. अब बहुत ज़्यादा सिलेबस है. बच्चे तैयारी करने लगते हैं तो उनके पास आता है 9th 10th का सिलेबस, देन A levels, FSC, सो मेनी बुक्स. सबसे पहले यू नीड टू नो द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. सबसे पहले हमारे पास मैथ्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, फैक्टराइजेशन एंड ज्योमेट्री. इनके अंदर गुड थिंग इज कि यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ ऑल ऑफ देम. ठीक है. लेकिन जहाँ पे बात आती है एडवांस फार्मूलाज की तो उसके अंदर आपको नो हाउ होनी चाहिए. ठीक है. वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं. ठीक है. एंड शेप्स वगैरह से रिलेटेड भी आते हैं. फिर इंग्लिश में हमारे पास आ जाती है कॉम्प्रिहेंशन, विच इज़ वेरी ट्रिकी बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन इज़ नॉट द बेसिक वन. ठीक है. सो यू नीड टू बी इन द रनिंग ऑफ रीडिंग. आपको आदत होगी तो आप उसको बहुत जल्दी से कर सकते हैं. हमारे पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ जाते हैं. हमारे पास वोकैबुलरी आ जाती है. हमारे पास स्पेलिंग्स आ जाते हैं. स्पेलिंग्स आर जेन्युइनली वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स बिकॉज वहाँ पे 3 स्पेलिंग्स एक जैसे लग रहे होते हैं. फिर हमारे पास आ जाता है इंटेलिजेंस. उसके अंदर हमारे पास आती है ऑड वन आउट, सीक्वेंसेस एंड सीरीज. ठीक है. कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस एंड नंबर रीजनिंग. These are genuinely like puzzles and they are very interesting. But what all of these need is practice, like a lot of practice. हमारे पास अब बहुत सिलेबस है तो ऑफ कोर्स आई वुड सजेस्ट टू यू दैट यू स्टडी फ्रॉम ताबीर अकेडमी बिकॉज उन्होंने हर चीज़ का ब्रेक डाउन किया हुआ है. हर सब्जेक्ट का ब्रेक डाउन है. हर सब्जेक्ट के अंदर जो उसका सब टॉपिक है उसकी भी आप तैयारी अलग से कर सकते हैं. टाइम मैनेजमेंट भी आप वहाँ पे कर सकते हैं बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ सो इंपॉर्टेंट. अगर आप लोग एक सवाल पे फंस गए हैं तो आप उसी के ऊपर बैठे रहेंगे. ठीक है. एंड दैट्स नॉट समथिंग यू शुड बी डूइंग. गुड थिंग अबाउट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पेपर में तो आप वैसे ही वर्क कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड के अंदर यू कैन स्किप एंड कम बैक टू द क्वेश्चन अगैन. आपको इन पे ऑप्शन आती है. ठीक है. जब आप कंप्यूटर बेस्ड के अंदर दे रहे हो उसके अंदर से यू कैन रिव्यू सम क्वेश्चंस. कभी होता है कि क्वेश्चन देखा आपको लगा कि आपने ठीक जवाब नहीं दिया हुआ शायद. ठीक है. आप उसको रिव्यू भी डाल सकते हैं. उसको बाद में रिव्यू करने के लिए भी आ सकते हैं. सो द प्रोसेस इज एक्चुअली फेयरली ईजी, बट what you need to focus on is on preparation. अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक है, अगर you have the practice, then you can ace it very, very easily. Merit has obviously increased in the previous years, sadly or not sadly, that is
based on the perspective, but I feel like sadly because it makes everything much more competitive. But you need to score at least more than 150 to 160 or more to actually secure a position. Anyway, that's all from my side for today. We'll get back to the specifics of it later on. Love is.